Want to speak real Urdu from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at urdupod101.com. How to respond, how are you? By the way, I'm good. Okay, let's get started. आप कैसे हैं? आप कैसी हैं? How are you? आप कैसे हैं? आप कैसी हैं? How are you? It's a pretty simple question and you can use it in an informal situation, also in a formal situation. और आप and you, और आप and you. So basically this question is an answer but asking a question. So you know what I mean? So if one person asks you, how are you? And then it's your turn to ask. So you just say, and you. So, और आप. आपका शुक्रिया. Thank you. आपका शुक्रिया. Thank you. Now, I would say आपका शुक्रिया in a more formal situation. And in an informal situation, I would just say shukriya. No need to use the word aap or tum, or no need to use any kind of helping verbs like ka or ki. Just shukriya. Thank you. So there you go. मैं ठीक हूँ. I'm fine. मैं ठीक हूँ. I'm fine. This expression or this phrase you can use in both formal and informal situations. It's a pretty simple expression. I'm fine. मैं ठीक हूँ. And also, this expression does not have any kind of hierarchy attached to it. What I mean is that if you're talking to an elder person or you're talking to a younger person, you'll reply both of them the same way. I'm fine. मैं ठीक हूँ. मैं बुरा नहीं हूँ. मैं बुरी नहीं हूँ. I'm not bad. मैं बुरा नहीं हूँ. मैं बुरी नहीं हूँ. I'm not bad. Actually, this phrase has, interestingly, two meanings. One is, I'm not bad, as in, how am I? But I'm not bad, like, I'm not a bad person. And in Urdu, we have the same phrase. मैं बुरा नहीं हूँ. I'm not a bad person. मैं बुरा नहीं हूँ. I'm not doing bad. So it's more of a translation thing. But in Urdu, you have the same sentence, but the expression on your face is different when you're conveying that expression. I hope you understand that it's not that confusing. मैं भी ठीक हूँ. I'm fine too. मैं भी ठीक हूँ. I'm fine too. So again, it's kind of an answer to a person already asking you a question or inquiring about your health, and it's just merely a answer to that one. It's pretty simple. I'm fine. I'm fine too. मैं ठीक हूँ. मैं भी ठीक हूँ. मुझे नींद आ रही है. I'm sleepy. मुझे नींद आ रही है. I'm sleepy. I think it's good to know this one. Sometimes you're bored and you just want to be removed out of the spot, so you just say मुझे नींद आ रही है. And again, there is no hierarchy attached to this specific phrase. You can just use it in any kind of situation. But yeah, try to keep your expressions polite. मुझे नींद आ रही है. I'm sleepy. Rather than saying मुझे नींद आ रही है. I'm sleepy. So the expression actually makes a hell lot of a difference when you are having a conversation in the Urdu language. मुझे बुरा महसूस हो रहा है. I'm feeling bad. मुझे बुरा महसूस हो रहा है. I'm feeling bad. Now this expression can be used in any situation in terms of anything, may it be food, your shopping experience, or your personal feeling towards another human being. So you just say, I'm feeling bad. For example, let's say I just had a bad curry and I say, मुझे बुरा महसूस हो रहा है. I'm feeling bad. You know, kind of like I'm not feeling good, I'm getting sick. But if I say, मुझे बुरा महसूस हो रहा है, for another person, I'm feeling bad. So you just got to practice it more in order to get the hang of using these expressions. And also they are very commonly used, so you just have to do more practice for these. मैं बेहतरीन हूँ. I'm great. मैं बेहतरीन हूँ. I'm great. बेहतरीन is also a word that describes the word better. I'm doing better. But the way you say it actually makes it I'm great.
मैं बेहतरीन हूँ. I'm great. पूछने के लिए शुक्रिया. Thank you for asking. पूछने के लिए शुक्रिया. Thank you for asking. It's, I think, more used when we are talking to our elders or but I think, I mean, you can use it for both formal or informal situations, as the translation says, thank you for asking. So it's polite to use such phrases. Top 25 phrases in Urdu. So let's get started. Hello. 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 Aap kaise hain? Hi. How are you? So hi and hello is basically the same thing in Urdu, and we translate it as hello. It's a very casual word, and you can use it with your friends, family, with anyone, I guess. Subah Bakhair. Good morning. Subah Bakhair. Good morning. Subah Bakhair, aapka din acha guzrega. Good morning. Have a nice day. Dopehar Bakhair. Good afternoon. Dopehar Bakhair. Good afternoon. Dopehar Bakhair. Dopehar ka khana kha liya. Good afternoon. Have you done lunch? I think this word is not very commonly used in Pakistan. Instead, I would recommend to use Assalamu alaikum or hello whenever you meet some person. You don't have to keep track of time as in like good morning, good afternoon, or good night. It's not very common. Shab Bakhair. Good night. Shab Bakhair. Good night. Shab Bakhair. Kal milenge. Good night. I'll see you tomorrow. This word is not very commonly used again, but maybe typical Urdu-speaking families might be using it. You can use it with your friends, family, and also you can use it formally. Anyway, it's a good word to remember. Aapka naam kya hai? What's your name? Aapka naam kya hai? What is your name? You can use this sentence with anyone. Any new person you meet, just ask the question, what's your name? Aapka naam kya hai? Main Afra hoon. I am Afra. Main Afra hoon. I am Afra. So if you observe in this sentence, after main, you have to use your name and then hoon. In any kind of place, you can just use it to tell other people your name. I am Afra. Main Afra hoon. Try it with your name. Aapse milkar khushi hui. Nice to meet you. Aapse milkar khushi hui. Nice to meet you. Probably you'll be using it a lot in your formal meetings with new people. Aap kaise hain? How are you? Aap kaisi hain? How are you? Aap kaise hain? How are you? Aap kaisi hain? How are you? So if you have observed, I've used kaisi and kaise. Kaisi is used for female and kaise is used for male. मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, और आप? I'm fine, thanks, and you? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, और आप? I'm fine, thanks, and you? So you can use this sentence to ask the other person when you reply that you are okay. बराहे मेहरबानी, please. बराहे मेहरबानी, please. बराहे मेहरबानी मेरी मदद कीजिए. Please help me. Anywhere you want to use please, just add the word barahe meherbani. For example, please do this for me. Barahe meherbani, mere liye ye kaam kijiye. Aapka shukriya. Thank you. Aapka shukriya. Thank you. Meri madad karne ke liye aapka shukriya. Thank you for helping me. It can be used formal, and it can also be used in an informal setting. That's pretty much it. Khush amdeed. You're welcome. Khush amdeed. You're welcome. I would say that this word is used a lot, but not in the context of saying you're welcome when somebody says thank you to you. This word is more used in the context of welcoming someone in your house or welcoming a customer in the restaurant. Ji haan. Yes. Ji haan. Yes. Ustad. आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? Teacher, have you finished your work? Shagird, जी हाँ. Student, yes. Basically, when you need to give your consent to someone
when you just need to nod, when you just need to say yes. So you can use this word, ji haan. If you're in an informal setting, like with your friends or family, sometimes you can just say haan, ji nahi, no, ji nahi, no. आपने इम्तिहान की तैयारी कर ली है? Have you finished your preparation for exam? जी नहीं, no. If you're in an informal setting, I would recommend using just नहीं. ठीक है, okay, ठीक है, okay. ये आपके साथ ठीक है? Is it okay with you? This word is very commonly used in Pakistan. Mostly people use it at the end of almost all the sentences just to give their consent that they are okay with it. So, ठीक है, ठीक है, okay, ठीक है. माफ कीजिएगा, excuse me. माफ कीजिएगा, excuse me. माफ कीजिएगा, ये मेरी सीट है. Excuse me, this is my seat. This word is very polite and mostly used in a formal situation, or I would say like people you don't know with, you can use it, but definitely not with friends and family. क्या वक्त हुआ है? What time is it? क्या वक्त हुआ है? What time is it? You can use this sentence to ask time. Any part of the day is okay. बैतुल खला कहाँ है? Where is the restroom? बैतुल खला कहाँ है? Where is the toilet? बैतुल खला, toilet. In Pakistan, many people can speak English, so English has become a part of Urdu to some extent. So we use the word bathroom commonly instead of Baitul Khala. So if you go to a person and just say, bathroom kahan hai, it would be okay. Where is the toilet? Where is the bathroom? Instead of using the word Baitul Khala. Kuch der intezar kare. Wait a moment. Kuch der intezar kare. Wait a moment. It's a very formal sentence and I think it's a good one to remember. Iski qeemat kitni hai? How much is this? Iski qeemat kitni hai? How much is this? This kind of sentence can be used in any market and at any time and by anyone, male or female. Barahe mehrbani, mujhe check mil sakta hai? Could I get the check please? Barahe mehrbani, mujhe check mil sakta hai? Could I get the check please? There's more than one way of saying it. Instead of the word check, you can also use the word bill. Bill is the same as in English bill, like the billing. So I would recommend using that word more often. It's more understandable and more commonly used. Madad, help. Madad, help. मैं तूफान में फंस गया हूँ, मेरी मदद करें. I'm stuck in a storm, help me. Just saying the word madad doesn't make any sense, like help. Maybe it makes sense in English, but not in Urdu. So when you say in Urdu, you might need to add something to the word madad. For example, मेरी मदद करें, please help me. बराहे मेहरबानी मदद करें, please help. बाद में मिलते हैं, see you later. बाद में मिलते हैं, see you later. अभी मैं मसरूफ हूँ, बाद में मिलते हैं. I'm busy at the moment, see you later. This phrase is very commonly used among friends. मुझे मालूम नहीं, I don't know. मुझे मालूम नहीं, I don't know. You can use this phrase for anything, for any kind of information that you don't know. You can just say, मुझे मालूम नहीं, I don't know. Not just for information, but information related to a person. For example, where is Ali? Ali कहाँ है? मुझे मालूम नहीं, I don't know. खुदा हाफिज, goodbye. खुदा हाफिज, goodbye. जाने का वक्त है, खुदा हाफिज. It's time to go, goodbye. Want to speak real Urdu from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at urdupod101.com. Top 10 questions that you should know. So let's get started. आपका नाम क्या है? What is your name? So the first question is, आपका नाम क्या है? What is your name? मेरा नाम अफरा है. My name is Afra. आप कहाँ से हैं? Where are you from? आप
कहाँ से हैं? Where are you from? मैं लाहौर से हूँ. I'm from Lahore. आपकी सालगिरह कब है? When is your birthday? आपकी सालगिरह कब है? When is your birthday? मेरी सालगिरह नवंबर में है. My birthday is in November. आप कहाँ रहती हैं? Where do you live? आप कहाँ रहती हैं? Where do you live? मैं लाहौर में रहती हूँ. I live in Lahore. So guys, you're going to notice that in a lot of questions, I'm going to be using some words which I'm going to change according to the principles of masculine and feminine nouns and verbs. And if you want to know more about it, please do visit our website. We have a whole other series explaining Urdu nouns and verbs and how the rules of masculine and feminine apply to it. So please try to stay with me on this one. आपका phone number क्या है? What's your phone number? So the next question is, आपका phone number क्या है? What is your phone number? मेरा phone number ये है. My phone number is, so you just have to replace your number with the word ye, and ye literally means this. आपने उर्दू कहाँ से सीखी? Where did you learn Urdu? आपने उर्दू कहाँ से सीखी? Where did you learn Urdu? मैंने उर्दू urdupod101.com से सीखी. I learned Urdu from urdupod101.com, which would be true in your case. Okay. क्या आप पाकिस्तानी खाना पसंद करती हैं? Do you like Pakistani food? क्या आप पाकिस्तानी खाना पसंद करती हैं? So if you're a guy, you would be using करते हैं, but if you're a girl, you'll be using करती हैं. Do you like Pakistani food? जी हाँ, मैं पाकिस्तानी खाना पसंद करता हूँ. Yes, I like Pakistani food. क्या आप पाकिस्तान गए हैं? Have you been to Pakistan? क्या आप पाकिस्तान गई हैं? Have you been to Pakistan? जी हाँ. Yes. आप पाकिस्तान में कहाँ जाना चाहते हैं? Where do you want to go in Pakistan? आप पाकिस्तान में कहाँ जाना चाहते हैं? Where do you want to go in Pakistan? मैं लाहौर जाना चाहती हूँ. I want to go to Lahore. आप पाकिस्तान में कितने दिन के लिए हैं? For how many days are you in Pakistan? आप पाकिस्तान में कितने दिन के लिए हैं? For how many days are you in Pakistan? मैं 5 दिनों के लिए पाकिस्तान में हूँ. I am in Pakistan for 5 days. Want to finally start speaking in your target language? In this guide, you'll discover the top 7 ways to practice speaking on your own with our lessons. Let's begin. Number 1, shadowing. Shadowing is a proven learning technique where all you do is repeat what you hear in order to practice speaking. So access any audio or video lesson on the site and press the play button to start. Then, as you listen or watch, just repeat the conversations. Or, even easier, read along out loud with the dialogue section. The script is right there in front of you. With our lessons, you can master entire conversations, just like that. Number 2, read out loud. I just mentioned it, but reading out loud is another powerful tactic and deserves its own mention. With every lesson, you get written transcripts and translations. So, as you play the lesson, read the dialogue out loud as you hear it. Why? By reading out loud, you're also practicing your speaking skills. You can do this with the lesson notes, the lesson transcript, or the dialogue tool. With the dialogue tool, you can listen to each line again and again, and repeat out loud until you master them all. Number 3, speed up your reading to speed up your speaking. Being able to speak without thinking is a sign of language mastery. If you're talking to a native and can respond quickly, they'll assume that you're fairly fluent. How can you do this? When you read out loud, try increasing your speed a little bit every time. So, start by reading with the dialogue tool. If you're like most learners, you'll read the first line slowly. That's because you're still getting used to the words, which is okay. Reread it. On your second try, you know most of the words, and you'll read a little faster.
Reread it again. On your third try, you'll be even faster, at a native speaker's speed. And being able to read these phrases out loud and fast will help you speak fast. Number 4, record and compare yourself with native speakers. In order to sound like a native speaker, you must imitate native speakers. So here's how. Access the voice recorder, which is in the dialogue study tool in every lesson. Click on the microphone icon. Listen to the native speaker's audio, and then record yourself. You can then compare the two recordings side by side, and practice and try again and again until you perfect your pronunciation. Number 5, get feedback from our Premium Plus teacher. If you're learning by yourself and don't have access to real teachers, then you can always get feedback from our Premium Plus teachers. With the My Teacher tool, you can record yourself speaking and send the audio file to the teacher. They'll review it and tell you what to improve and how. That's it. Number 6, level up your speaking with Premium Plus assignments. With Premium Plus, you can also get assignments that cover reading, writing, listening, and even speaking from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You get a new one every week, or anytime you're ready for a new one. Number 7, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons on speaking and conversations, visit our lesson library and under Category, choose Conversation. You'll get all of the pathways and lessons that are focused on speaking. In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक खातून एक बुक स्टोर पर स्टोर क्लर्क से कुछ मांग रही है। ये खातून कौन सी किताब देखना चाहती है? माफ़ कीजिएगा, मैं इस शेल्फ पर रखी एक किताब देखना चाहती हूँ। आप कौन सी किताब देखना पसंद करेंगी? वो जो कारों के बारे में है। एक मिनट प्लीज़। क्या ये किताब? जी हाँ, यही किताब। ये लीजिए। ये खातून कौन सी किताब देखना चाहती है? एक खातून एक बुक स्टोर पर स्टोर क्लर्क से कुछ मांग रही है। ये खातून कौन सी किताब देखना चाहती है? माफ़ कीजिएगा, मैं इस शेल्फ पर रखी एक किताब देखना चाहती हूँ। आप कौन सी किताब देखना पसंद करेंगी? वो जो कारों के बारे में है। एक मिनट प्लीज़। क्या ये किताब? जी हाँ, यही किताब। ये लीजिए। एक रेस्टोरेंट में एक मर्द और एक खातून मेन्यू देख रहे हैं। मर्द क्या ऑर्डर करने जा रहा है? आप क्या ऑर्डर करेंगी? लगता है पिज़्ज़ा जायकेदार होगा। मेरा ख्याल है मैं वही लूँगी। मैंने कल ही पिज़्ज़ा खाया है, इसलिए। ठीक है, तो फिर हैमबर्गर के बारे में क्या ख्याल है? बेहतर है, मैं वही लूँगा। मर्द क्या ऑर्डर करने जा रहा है? एक रेस्टोरेंट में एक मर्द और एक खातून मेन्यू देख रहे हैं। मर्द क्या ऑर्डर करने जा रहा है? आप क्या ऑर्डर करेंगी? लगता है पिज़्ज़ा जायकेदार होगा। मेरा ख्याल है मैं वही लूँगी। मैंने कल ही पिज़्ज़ा खाया है, इसलिए। ठीक है, तो फिर हैमबर्गर के बारे में क्या ख्याल है? बेहतर है, मैं वही लूँगा। एक मर्द डॉक्टर के दफ्तर फ़ोन कर रहा है। उसे किस वक्त तक डॉक्टर के दफ्तर पहुंच जाना चाहिए? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आज किस वक्त आपका दफ्तर बंद होगा?
हम 6 बजे बंद करेंगे, लेकिन बराह करम 5:30 बजे से कबल आ जाएं। ठीक है, शुक्रिया। उसे किस वक्त तक डॉक्टर के दफ्तर पहुंच जाना चाहिए? एक मर्द डॉक्टर के दफ्तर फ़ोन कर रहा है। उसे किस वक्त तक डॉक्टर के दफ्तर पहुंच जाना चाहिए? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आज किस वक्त आपका दफ्तर बंद होगा? हम 6 बजे बंद करेंगे, लेकिन बराह करम 5:30 बजे से कबल आ जाएं। ठीक है, शुक्रिया। एक लड़का अपनी जर्नल से पढ़ रहा है। आज के दिन लड़के ने सबसे पहला काम क्या किया? आज मौसम बड़ा सुहाना था। मैं दोपहर में पूल पर स्विमिंग के लिए गया और शाम को मैं एक फ़िल्म देखने गया। मैंने भी सुबह भर पढ़ाई की। आज का दिन बुरा नहीं रहा। आज के दिन लड़के ने सबसे पहला काम क्या किया? एक लड़का अपनी जर्नल से पढ़ रहा है। आज के दिन लड़के ने सबसे पहला काम क्या किया? आज मौसम बड़ा सुहाना था। मैं दोपहर में पूल पर स्विमिंग के लिए गया और शाम को मैं एक फ़िल्म देखने गया। मैंने भी सुबह भर पढ़ाई की। आज का दिन बुरा नहीं रहा। एक मर्द और एक खातून एक तस्वीर देख रहे हैं। वो कौन सी तस्वीर देख रहे हैं? क्या ये इस फुटबॉल टीम की तस्वीर नहीं है जिसमें आपका बेटा भी है? आपका बेटा कौन सा है? ये है। ओहो, वो सबसे लंबा है। जी हाँ, वो तो मुझसे भी लंबा है। वो कौन सी तस्वीर देख रहे हैं? एक मर्द और एक खातून एक तस्वीर देख रहे हैं। वो कौन सी तस्वीर देख रहे हैं? क्या ये इस फुटबॉल टीम की तस्वीर नहीं है जिसमें आपका बेटा भी है? आपका बेटा कौन सा है? ये है। ओहो, वो सबसे लंबा है। जी हाँ, वो तो मुझसे भी लंबा है। Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. I was reading. मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था। Here you go. ये लो, ये लो। I'm tired. मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ। It's sunny. धूप है, धूप है। I forgive you. मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैंने तुम्हें माफ़ किया। Excuse me. Excuse me. Excuse me. Where is the bathroom? बाथरूम कहाँ है? बाथरूम कहाँ है? I want a bottle of water. मुझे पानी की एक बोतल चाहिए। मुझे पानी की एक बोतल चाहिए। It takes about 30 minutes by train. रेलगाड़ी से 30 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी से 30 मिनट लगते हैं। And you? और तुम?
और तुम? How old are you? आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? Where are you from? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? Can you help me? आप मदद कर सकते हैं? आप मदद कर सकते हैं? Bye bye. अलविदा। अलविदा। Who is it? कौन है? कौन है? May I sit here? मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। That's okay. ये ठीक है। ये ठीक है। Thank you very much. आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। I have to go. मुझे जाना है। मुझे जाना है। I don't know. मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। We'll give you a call. हम आपको कॉल करेंगे। हम आपको कॉल करेंगे। Is this your first time with us? हमारे साथ ये आपकी पहली बार है? हमारे साथ ये आपकी पहली बार है? Is the water too cold? पानी बहुत ठंडा है? पानी बहुत ठंडा है? I'll leave it up to you. मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। Sign here, please. बराहे मेहरबानी यहाँ दस्तखत करें। बराहे मेहरबानी यहाँ दस्तखत करें। I'd like to exchange money. मुझे रकम तबादला करना है। मुझे रकम तबादला करना है। I'd like to open an account. मुझे अकाउंट खोलना है। मुझे अकाउंट खोलना है। I'd like to make a deposit. मुझे रकम जमा करनी है। मुझे रकम जमा करनी है। Could I have a statement, please? बराहे मेहरबानी मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए। बराहे मेहरबानी मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए। Do you have any identification? आपके पास कोई शनाख्त है? आपके पास कोई शनाख्त है? Go back. वापस जाओ। वापस जाओ। Are there any annual charges with this account? इस अकाउंट के साथ कोई सालाना चार्जेस नहीं हैं? इस अकाउंट के साथ कोई सालाना चार्जेस नहीं हैं? Can you come back later? आप बाद में आ सकते हैं? आप बाद में आ सकते हैं? Sorry, we're completely booked. माजरत, हम मुकम्मल तौर पर बुक हैं। माजरत, हम मुकम्मल तौर पर बुक हैं। Can I have a receipt, please? मुझे बराहे मेहरबानी रसीद मिल सकती है? मुझे बराहे मेहरबानी रसीद मिल सकती है? Can I have a bag, please? मुझे बराहे मेहरबानी बैग मिल सकता है?
मुझे बराह मेहरबानी बैग मिल सकता है? I'll take one of this. मैं इसमें से एक ले लेता हूँ। मैं इसमें से एक ले लेता हूँ। Ready to start? शुरू करने के लिए तैयार हो? शुरू करने के लिए तैयार हो? It's already Sunday. अभी से इतवार है। अभी से इतवार है। It's midnight. आधी रात है। आधी रात है। It's noon. दोपहर हो गई है। दोपहर हो गई है। It's 3 o'clock. 3 बजे हैं। 3 बजे हैं। It ends in 30 minutes. ये 30 मिनट में ख़त्म होता है। ये 30 मिनट में ख़त्म होता है। What day is it today? आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? Today is Wednesday. आज बुध है। आज बुध है। The day after tomorrow is Friday. परसों जुमा है। परसों जुमा है। Monday is the worst day of the week. पीर का रोज़ हफ्ते का बदतरीन दिन है। पीर का रोज़ हफ्ते का बदतरीन दिन है। We'll arrive 30 minutes early. हम 30 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। हम 30 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। It looks like it will take about 30 more minutes to get there. ऐसा लगता है कि वहां पहुंचने में 30 मिनट और लगेंगे। ऐसा लगता है कि वहां पहुंचने में 30 मिनट और लगेंगे। The flight will arrive at 8:45 p.m. परवाज़ शाम 8:45 बजे पहुंच जाएगी। परवाज़ शाम 8:45 बजे पहुंच जाएगी। She'll be here by 7 p.m. वो शाम 7 बजे पहुंच जाएगी। वो शाम 7 बजे पहुंच जाएगी। Want to speak real Urdu from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at urdupod101.com. It's 10 p.m. अभी 10 बजे हैं। अभी 10 बजे हैं। It's hot. गर्मी है। गर्मी है। Thank you. शुक्रिया। शुक्रिया। It was yesterday. कल हुआ था। कल हुआ था। What about next week? अगले हफ्ते हो सकता है। अगले हफ्ते हो सकता है। Goodbye. अलविदा। अलविदा। No problem. कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। I really appreciate it. मैं वाकई इसकी कदरदानी करता हूँ। मैं वाकई इसकी कदरदानी करता हूँ। Hello. हेलो। हेलो। It was last month. गुज़िश्ता माह। गुज़िश्ता माह। I'm afraid I can't make it. मैं नहीं आ सकूंगा। मैं नहीं आ सकूंगा। Nice to meet you.
आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। Delicious. मज़ेदार। मज़ेदार। It's difficult. ये मुश्किल है। ये मुश्किल है। Make yourself at home. अपना ही घर समझें। अपना ही घर समझें। How have you been? तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? This is for you. ये आपके लिए है। ये आपके लिए है। Don't worry. फिक्र ना करो। फिक्र ना करो। Really? वाकई? वाकई? Please forgive me. बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो। बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो। I don't like it. मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है। What time is it? क्या वक्त हुआ है? क्या वक्त हुआ है? Awesome. ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। Help. बचाओ। बचाओ। What's your phone number? आपका फ़ोन नंबर क्या है? आपका फ़ोन नंबर क्या है? Slower, please. बराहे मेहरबानी थोड़ा आहिस्ता। बराहे मेहरबानी थोड़ा आहिस्ता। Once again, please. बराहे मेहरबानी एक बार फिर। बराहे मेहरबानी एक बार फिर। Long time no see. तवील अरसे से मुलाकात नहीं हुई। तवील अरसे से मुलाकात नहीं हुई। I have no money. मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। Where are you? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? I need a doctor. मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। Call the police. पुलिस को कॉल की जाए। पुलिस को कॉल की जाए। Hold on. रुको। रुको। My vacation starts in 2 weeks. मेरी छुट्टी 2 हफ्ते में शुरू हो रही है। मेरी छुट्टी 2 हफ्ते में शुरू हो रही है। When is it? ये कब है? ये कब है? When is your birthday? आपकी सालगिरह कब है? आपकी सालगिरह कब है? Where do you work? आप कहाँ काम करते हैं? आप कहाँ काम करते हैं? I understand. मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ। What did you say? आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? My mother is well. मेरी माँ ठीक है। मेरी माँ ठीक है। Sorry to keep you waiting.
इंतज़ार की माज़रत, इंतज़ार की माज़रत। How are you? आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? How many people are there in your family? आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं? आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं? Congratulations. मुबारक हो, मुबारक हो। Never mind. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Don't mention it. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Do you understand? आपको समझ आई? आपको समझ आई? Happy anniversary. शादी की सालगिरह मुबारक हो, शादी की सालगिरह मुबारक हो। Top 10 phrases to amaze native speakers. Let's get started. आपका शुक्रिया, लेकिन मैं असल में पैदाइशी बोलने वाला नहीं हूँ। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं असल में पैदाइशी बोलने वाली नहीं हूँ। Thank you, but I'm not a native speaker actually. आपका शुक्रिया, लेकिन मैं असल में पैदाइशी बोलने वाला नहीं हूँ। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं असल में पैदाइशी बोलने वाली नहीं हूँ। Thank you, but I'm not a native speaker actually. I would say it would be quite a compliment if you can receive that kind of appreciation after learning Urdu from urdupod101.com. मैं 3 साल में एक मुकामी बोलने वाले की तरह उर्दू बोलूँगा। मैं 3 साल में एक मुकामी बोलने वाले की तरह उर्दू बोलूँगी। I will speak Urdu like a native speaker in 3 years. मैं 3 साल में एक मकामी बोलने वाले की तरह उर्दू बोलूँगा। मैं 3 साल में एक मकामी बोलने वाले की तरह उर्दू बोलूँगी। I will speak Urdu like a native speaker in 3 years. मैं 10 साल से उर्दू सीख रहा हूँ। मैं 10 साल से उर्दू सीख रही हूँ। I have been learning Urdu for 10 years. मैं 10 साल से उर्दू सीख रहा हूँ। मैं 10 साल से उर्दू सीख रही हूँ। I have been learning Urdu for 10 years. मैं सबटाइटल्स के बगैर पाकिस्तानी फिल्में देख सकता हूँ। मैं सबटाइटल्स के बगैर पाकिस्तानी फिल्में देख सकती हूँ। I can watch Pakistani movies without subtitles. मैं सबटाइटल्स के बगैर पाकिस्तानी फिल्में देख सकता हूँ। मैं सबटाइटल्स के बगैर पाकिस्तानी फिल्में देख सकती हूँ। I can watch Pakistani movies without subtitles. Wow, that's quite impressive, I think. मैं उर्दू के तकरीबन 50 नए अल्फाज एक दिन में याद कर सकता हूँ। मैं उर्दू के तकरीबन 50 नए अल्फाज एक दिन में याद कर सकती हूँ। I can memorize around 50 new Urdu words in a day. मैं उर्दू के तकरीबन 50 नए अल्फाज एक दिन में याद कर सकता हूँ। मैं उर्दू के तकरीबन 50 नए अल्फाज एक दिन में याद कर सकती हूँ। I can memorize around 50 new Urdu words in a day. उर्दू मज़ेदार है और सीखने में आसान है। उर्दू is fun and easy to learn. उर्दू मज़ेदार है और सीखने में आसान है। उर्दू is fun and easy to learn. उर्दू जानने के अलावा मैं चंद दीगर ज़बानें भी बोल सकता हूँ। उर्दू जानने के अलावा मैं चंद दीगर ज़बानें भी बोल सकती हूँ। Apart from knowing Urdu, I can speak a few other languages as well. उर्दू जानने के अलावा
मैं चंद दीगर ज़बानें भी बोल सकता हूँ. उर्दू जानने के अलावा मैं चंद दीगर ज़बानें भी बोल सकती हूँ. Apart from knowing Urdu, I can speak a few other languages as well. मैं तमाम उर्दू खुद से सीख रहा हूँ. मैं तमाम उर्दू खुद से सीख रही हूँ. I am learning Urdu all by myself. मैं तमाम उर्दू खुद से सीख रहा हूँ. मैं तमाम उर्दू खुद से सीख रही हूँ. I'm learning Urdu all by myself. जो कुछ आपने कहा मैं मुकम्मल तौर पर सब कुछ समझ गई. जो कुछ आपने कहा मैं मुकम्मल तौर पर सब कुछ समझ गया. I completely understood everything you said. जो कुछ आपने कहा है मैं मुकम्मल तौर पर सब कुछ समझ गई. जो कुछ आपने कहा मैं मुकम्मल तौर पर सब कुछ समझ गया. I completely understood everything you said. मैं नई और पुरानी उर्दू जानता हूँ. मैं नई और पुरानी उर्दू जानती हूँ. I know old and new Urdu. मैं नई और पुरानी उर्दू जानता हूँ. मैं नई और पुरानी उर्दू जानती हूँ. I know old and new Urdu. I think this is one of the most impressive phrases that you can say to anyone. Do you know how to say thank you in Urdu? In this lesson, you will learn 3 different ways to say thank you and how to respond. Let's start with the easiest one. Shukriya. Shukriya. It means thank you. If you want to show your sincere appreciation for something, you can say this phrase, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. The word बहुत means very much. So this expression means thank you very much. It expresses a deeper appreciation for a personal kindness. When you want to show your appreciation, you can also say Jazak ALLAH. Jazak ALLAH. It literally means may you get rewarded by Allah. Now you know 3 different ways to say thank you in Urdu. But how do you respond if someone thanks you? If someone thanks you in Urdu, simply say nahi nahi, koi masala nahi. It means it's no problem. Let's wrap up this lesson by recapping what we have learned. Listen to the expression and repeat after me. Thank you. Shukriya. Shukriya. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. May you get rewarded by Allah. Jazak ALLAH. Jazak ALLAH. And to respond, just say nahi nahi, koi masala nahi. नहीं नहीं कोई मसला नहीं. Well done. Pakistanis often show politeness simply by using polite pronouns and verb forms when speaking instead of saying thank you and you are welcome. So don't be surprised. In this lesson, you are going to learn how to apologize in Urdu.
There are a number of ways to apologize, but in a formal situation, you should use maaf kijiye. Maaf kijiye. The first word maaf literally means forgive, and kijiye is a polite form of the verb meaning please do. So this expression actually means something like forgive me please. Now let's hear it again. Maaf kijiye. Maaf kijiye is used in formal situations when you're communicating with someone you have met for the first time, with elders, and usually also when communicating with women. It is not used among friends or people who are informal with each other. The informal way to say I'm sorry is maaf karo. Maaf karo. Let's review. Maaf kijiye is the formal way to say I'm sorry or excuse me. Maaf karo is the informal way to say I'm sorry or excuse me. These are all versatile phrases with a few different meanings, depending on the situation. Whether you are trying to get someone's attention for a question or making your way through a crowded area, or apologizing for stepping on someone's foot, these are all phrases you could use. Now imagine someone says maaf kijiye to you after having done something wrong. How would you respond? In this case, the proper phrase is koi baat nahi. Koi baat nahi. This means something like it doesn't matter. Koi baat nahi. You might remember this phrase from lesson 2. It is the same phrase you can use when responding to someone thanking you. Now it's time for Afra's advice. If someone bumps into you on the streets in Pakistan, don't expect an excuse me, especially in the big cities. Pakistanis are usually very friendly people, but just don't consider excusing themselves for bumping into someone as time well spent. Big crowds are very common in big cities. Unless someone pushes you over so hard you fell on the ground, keep walking. Today we're going to talk about 4 techniques to help you stop translating in your head and instead start thinking in your target language. This will allow you to have conversations with ease, read smoothly, and better understand native speakers. These are 4 methods to help you think in a new language. Number 1, surround yourself with your target language. This way, you'll be completely immersed in the language. Without realizing it, you'll learn pronunciation, sentence structures, grammar, and new vocabulary. Play music in the background while you're cooking, or have a radio station on while you study. Just use one of our endless podcasts available to you. These are easy to listen to in the background while doing other things. Number 2, learn through observation. This is how we all learned our native languages as kids. Words will develop their own meanings that relate better to your target language, rather than meanings that are translated directly. Number 3, speak out loud to yourself. Even if you're a little embarrassed, it forces you to listen to how you speak. It makes it much easier to spot simple grammar mistakes. Number 4, practice daily. If you practice everything for only one day, you won't retain the information you learned. The brain can realistically only focus for about 30 minutes. So studying a little every day allows you to absorb better. Follow these steps and have patience. You'll soon be able to achieve your language learning goals. Just make sure to remember these 4 methods. Sign up for your free lifetime account. No credit card required, and you'll get the best free online resources. And start learning more every day. Hello, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम अली है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा है. आशा जी, आपका नाम अच्छा है. आपका शुक्रिया. कमाल जी, आप कैसे हैं? ओह माहिमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ. आपका शुक्रिया. आपका बेटा कैसा है? वो बहुत अच्छा है. आपका शुक्रिया. आपकी उम्र क्या है? मैं 30 साल का हूँ. आपके कितने बच्चे हैं? मेरे कोई बच्चे नहीं हैं. तमगा, मेडल. तमगा, गा.
The sound of gha or the alphabet ghain is always coming from here. So try it from here. Tamgha. Usse ek tamgha mila. He got a medal. Dilchaspi, interest. Dilchaspi, interest. Dilchaspi, dilchaspi, interest. मुझे फिल्मों में दिलचस्पी है. I have an interest in movies. खिड़की, window. खिड़की, window. खिड़की खोलें, open the window. Probably it is quite difficult because I think I've never studied this word in English or in Arabic. So it's kind of hard to get it in the first go. So just keep practicing, and the tip would be to keep rolling your tongue. So your tongue will be touching your upper teeth, and just practice it and don't be shy. Munche, mustache. Munche, mustache. Aapki munche achhi lagti hain. Your mustache looks good. You can see there is the word che, and then you have he, and you're joining the two words che he, and it becomes ch, ch, mu, che. If you have already are finished with the Urdu alphabets, Urdu haruf tahajji, then you will note jim, che, he, khe, and all of these alphabets, jim, che, he, khe, we use it with he. For example, for jim, it will be jim he, jah, che he, chah, khe he, kha. So I hope it helps. Just practice it. Keep rolling. Khush kismat, lucky. Khush kismat, khush kismat, lucky. मैं खुश किस्मत हूँ. I am lucky. Chalang, jump. Chalang. Again in this word, it's ch. Chalang, jump. लड़की ने हवाई जहाज से छलांग लगाई. The girl jumped off the plane. घुटना, knee. घुटना, knee. One more time. Ghutna. So it is gaf, and you're adding it with he, and it becomes g, g, ghutna. Mera ghutna zakhmi hai. My knee is injured. Akhrot, walnut. Akhrot. So this word khe, it also comes from your, I would say like throat. So you'll really have to do is like akhrot. मुझे अखरोट पसंद है. I like walnuts. ग़ज़ाइयत, nutrition. ग़ज़ाइयत, nutrition. इस खाने में अच्छी ग़ज़ाइयत है. This food has good nutrition. I would like to point it over here that the alphabet haruf tahajji, zal. So ग़ज़ाइयत, ग़ज़ाइयत. There are two alphabets in Urdu. One is ze and one is zal. And there is a slight difference in how you say it. For example, in this one, you are saying ghazayat. And the one that is ze, that is very, very sharp, very sharp. So this is, I would say, a bit more soft. Tajassus, curiosity. Tajassus, curiosity. उसका तजस्सुस उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है. His curiosity is damaging his health. क्या आपने हाल ही में वजन बढ़ाया है? Have you gained weight recently? So the first phrase would be क्या आपने हाल ही में वजन बढ़ाया है? Have you gained weight recently? Oh my God, I think this is kind of every woman's nightmare. आपका एक बाल सफेद है. You have a gray hair. आपका एक बाल सफेद है. You have a gray hair. If you're talking to many Pakistani women, probably their head is mostly covered. So yeah, I don't think you would be able to find a white hair, a white strand in their hair. मैंने आपको ऐसा कहा था. I told you so. मैंने आपको ऐसा कहा था. I told you so. आपको निकाल दिया है. You're fired. आपको निकाल दिया है. You're fired. I hope you never have to hear that one. आज मेरे पास आपके पैसे नहीं हैं.
I don't have your money today. आज मेरे पास आपके पैसे नहीं हैं. I don't have your money today. Yeah, I've been there. हमें बात करने की ज़रूरत है. We need to talk. हमें बात करने की ज़रूरत है. We need to talk. Yeah, I mean, you would really want to know this phrase, you know. माफ़ करना, मैं भूल गया. माफ़ करना, मैं भूल गई. Sorry, I forgot. माफ़ करना, मैं भूल गई. Sorry, I forgot. आपको मेहनत करने की ज़रूरत है. You need to work hard. आपको मेहनत करने की ज़रूरत है. You need to work hard. आपकी इस साल भी तरक्की नहीं हो सकती. You cannot be promoted this year too. आपकी इस साल भी तरक्की नहीं हो सकती. You can't be promoted this year too. हमें दूसरे लोगों को देखना चाहिए. We should see other people. हमें दूसरों को देखना चाहिए. We should see other people. तले हुए खाने, fried foods. So the first one would be, of course, तले हुए खाने, fried foods. तले हुए खाने सेहत के लिए नुकसानदेह हैं. Fried foods are harmful to one's health. People of Lahore, Lahoris are famous for their fried food and the street food. And I think it is almost unavoidable in all the street food that we have in Lahore. Everything is fried. Everything, even the vegetables. Mithai, sweets. So the next word will be mithai, sweets. मुझे मिठाई पसंद है. I like sweets. So in Pakistan we have all those sweets like barfi, gulab jamun, rasgulle, and they have lots of sugar in it and they are really, really harmful for your health. But I would ask you to try it because they are really delicious. जमे हुए खाने, frozen meals. जमे हुए खाने, frozen meals. जमे हुए खाने मज़ेदार नहीं होते. Frozen meals are not tasty. I think it is not very common in Pakistan to have as in cooked frozen meals, like you just take them home and just microwave them and just eat it. But we do have those frozen meal. I wouldn't say frozen meals, I would say frozen food, as in nuggets and some meat that is frozen, and also we have frozen vegetables. So they are not exactly a meal, but yeah, frozen food. Aloo ke chips, potato chips. Aloo ke chips, potato chips. मुझे आलू के chips पसंद हैं. I like potato chips. I do. Margarine, 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 margarine. Margarine सेहत के लिए अच्छा नहीं है. Margarine is not good for one's health. Microwave popcorn, microwave popcorn, microwave popcorn, microwave popcorn. मुझे microwave popcorn पसंद नहीं है. I don't like microwave popcorn. Are you kidding me? Instant noodles, instant noodles, instant noodles, instant noodles. In Pakistan, you would hear 2-minute noodles, Maggi noodles, but what it means is instant noodles. And Maggi noodles, even though the company is not Maggi, there are many companies who are manufacturing or making this product, but Maggi is just such a big brand name that the kids are always asking their moms like, I want Maggi noodles, but the company is something different. So yeah, what it means is that they want instant noodles. For example, instant noodles banana आसान है. It's easy to make instant noodles. Candy, 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 candy. बच्चों को candy पसंद है. Children like candies. Soda, 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 soda. हर रोज soda ना पिएं. Don't drink soda every day. So in Pakistan, it is really common to have soda in summer season because our summers are like really hot, really, really hot.
all these drinks are quite unhealthy, but the one drink that I recommend to almost all the tourists that they go to Pakistan is ganne ka ras. It is a syrup made from sugarcane, and if you are feeling really hot and you're outside, just go to a stall and you ask them, give me raw sugarcane soda, and it's quite healthy for you, and they'll make it fresh in front of you. You can see all the big sugarcane getting in the machine, and the syrup is coming from the other side. So it's quite healthy actually. Basically, you can see this soda, or you can see this drink being sold in on small stalls in the streets, and you just go there and just say, "Mujhe ganne ka ras dein. Mujhe ro ka glass dein. Give me a glass of sugarcane soda or sugarcane syrup." And there are two words that we use in Urdu for this. One is ganne ka ras, and the other one is ro. Mujhe ro dein. Give me a sugarcane soda or drink. Shakkar, sugar. Shakkar, sugar. वो अपनी चाय में ज़्यादा शक्कर डालता है. He adds a lot of sugar to his tea. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. It's 10 p.m. अभी 10 बजे हैं. अभी 10 बजे हैं. It's hot. गर्मी है. गर्मी है. Thank you. शुक्रिया. शुक्रिया. It was yesterday. कल हुआ था. कल हुआ था. What about next week? अगले हफ्ते हो सकता है. अगले हफ्ते हो सकता है. Goodbye. अलविदा. अलविदा. No problem. कोई मसला नहीं. कोई मसला नहीं. I really appreciate it. मैं वाकई इसकी कदरदानी करता हूँ. मैं वाकई इसकी कदरदानी करता हूँ. Hello. हेलो. हेलो. It was last month. गुज़िश्ता माह. गुज़िश्ता माह. I'm afraid I can't make it. मैं नहीं आ सकूँगा. मैं नहीं आ सकूँगा. Nice to meet you. आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई. Delicious. मज़ेदार. मज़ेदार. It's difficult. ये मुश्किल है. ये मुश्किल है. Make yourself at home. अपना ही घर समझें. अपना ही घर समझें. How have you been? तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? This is for you. ये आपके लिए है. ये आपके लिए है. Don't worry. फिक्र ना करो. फिक्र ना करो. Really? वाकई? वाकई? Please forgive me. बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो. बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो. I don't like it. मुझे ये पसंद नहीं है. मुझे ये पसंद नहीं है. What time is it?
क्या वक्त हुआ है? क्या वक्त हुआ है? Awesome. जबरदस्त, जबरदस्त। Help. बचाओ, बचाओ। What's your phone number? आपका फ़ोन नंबर क्या है? आपका फ़ोन नंबर क्या है? Slower, please. बराहे मेहरबानी थोड़ा आहिस्ता। बराहे मेहरबानी थोड़ा आहिस्ता। Once again, please. बराहे मेहरबानी एक बार फिर। बराहे मेहरबानी एक बार फिर। Long time no see. तवील अरसे से मुलाकात नहीं हुई। तवील अरसे से मुलाकात नहीं हुई। I have no money. मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। Where are you? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? I need a doctor. मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। Call the police. पुलिस को कॉल की जाए। पुलिस को कॉल की जाए। Hold on. रुको, रुको। My vacation starts in 2 weeks. मेरी छुट्टी 2 हफ्ते में शुरू हो रही है। मेरी छुट्टी 2 हफ्ते में शुरू हो रही है। When is it? ये कब है? ये कब है? When is your birthday? आपकी सालगिरह कब है? आपकी सालगिरह कब है? Where do you work? आप कहाँ काम करते हैं? आप कहाँ काम करते हैं? I understand. मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ। What did you say? आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? My mother is well. मेरी माँ ठीक है। मेरी माँ ठीक है। Sorry to keep you waiting. इंतज़ार की माज़रत। इंतज़ार की माज़रत। How are you? आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? How many people are there in your family? आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं? आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं? Congratulations. मुबारक हो। मुबारक हो। Never mind. कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। Don't mention it. कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। Do you understand? आपको समझ आई? आपको समझ आई? Happy anniversary. शादी की सालगिरह मुबारक हो। शादी की सालगिरह मुबारक हो। Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.